Chapter 10 Circles, Session 2. Let's start. Angles obtained by the chord at a point. Now, what does it mean? If I have a circle, if I have a circle, right, with this chord. So, angles obtained by the chord at any point. At any point means if I have the center, then angles obtained by the chord at the center. So, this is called the angle subtended by the chord at the center. Now, angle subtended by the chord at the major arc. So, this is called the angle subtended by the chord in the major arc. Angle subtended by the chord in the minor arc. So, ये क्या हो गया? Angle subtended by the chord in the minor arc. So, this point's line must be touched at the circle. Okay. So, let's see. This is the center, and this is called the angle subtended by the chord. Angle subtended by the chord at the center. Now, this is called the angle subtended by the chord at the major arc. This is the, you can see the this blue line, right? This is called the angle subtended by the chord at the major arc. And then what I can say is angle subtended by the chord in the minor arc. Okay, so this is the brownish color arrow, you can see this is the angle subtended by the chord in the minor arc. Now let's see something else. See, equal chords of the circle subtends the equal angle at the center. Equal chords of a circle subtends equal angle at the center. Now what does it mean? See, if I have a circle with the center O, now I have a chord AB and I have a chord CD. So both the chords have the equal length, and say just for example, if I can say it is a 5 centimeter, right? If both the chords are of equal length, then they subtends the equal angle at the center. What does it mean? So अगर ये 50 का है तो ये भी कितने का होगा? 50 का होगा. So that simply means कि अगर दोनों कोड की लेंथ इक्वल है, अगर दोनों कोड की लेंथ कैसी है? इक्वल है, तो वो सेंटर पे कैसा एंगल सबटेंड करेगा? इक्वल एंगल. मतलब ये अगर 50 का है तो ये भी कितने का होगा? 50 का होगा, राइट? सो ये एंगल और ये एंगल दोनों ग्रीन कलर के एंगल सबको दिख रहे हैं. सो उसका मतलब मैंने इसी के लिए रखा है क्योंकि वो इक्वल है, तो दोनों का सेम कलर दिया है, राइट? सो equal angle subtends the equal chords subtends the equal angle at the center. This is theorem 10.1. Now theorem 10.2. If angles subtended by the chords of a circle at the centers are equal, then the chords are of equal length. So see here, AB and CD are the chord that is not drawn yet. Now see, if this is CD is going to subtract the angle something here and something here. See, something over here and something over here. So both are say equal angle. So both are, we can say it is also 50, it is also 50, right? So this length of the chords are equal. So that's the length of the chords are equal. Now 10.3, perpendicular from the center to the chord. Now perpendicular from the center of a circle to the chord bisects the chord. So now what does it mean? So if I have a circle with the center O with the chord AB, अब क्या किया है कि भाई सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कोड को, तो वो कोड को क्या करेगा? बाइसेक्ट. मतलब ये भी और ये भी दोनों इक्वल के होंगे. दैट मीन्स अगर ये पूरा का पूरा ए बी अगर 50 का है, तो मैं ऐसा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो इतना पोर्शन 25 का और इतना पोर्शन भी क्या हो जाएगा? 25 का. अगर मैं यहाँ पर M लिखूँ तो OM perpendicular to the AB, that means it bisects the AB. OM bisects the AB. अगर ये पूरा 50 का है तो 25 के दो पार्ट्स हो जाएंगे. AM is equals to BM is equals to 25. Okay, so this is the perpendicular line OM, and now AM is equals to MB. The line drawn through the center of a circle. The line drawn through the center of the circle bisects the chord is perpendicular to the chord, right? ये सेंटर है, उसका रिवर्स है. अगर लाइन है परपेंडिकुलर हो रहा है तो उसको बाइसेक्ट करेगा. अगर उसको बाइसेक्ट कर रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर. सिंपल. देयर इज ओनली एंड ओनली वन सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन लीनियर गिवन पॉइंट. अब इस 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो सकता है ना भाई, दूसरा तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता. सो उससे सिर्फ और सिर्फ कितने सर्कल पास होंगे? एक ही सर्कल पास होगा. ओके, Okay, now let's start theorem 10.6. Equal chords of a circle are equidistant from the center.
So equal chords of a circle. So see, equal chords of a circle क्या दिया है, equal chords of a circle are equidistant from the center. अगर ये 5 का है, ये 5 का है, तो ये दोनों का डिस्टेंस भी कैसा होगा, सेम. अगर ये 3 का है तो ये भी कितने का होगा, 3 के डिस्टेंस पर ही होगा. और दूसरी चीज, डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्स परपेंडिकुलरली. डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्स परपेंडिकुलरली, राइट. यहाँ से भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस जब भी मेजर करो तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलरली होता है. डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्स परपेंडिकुलरली, राइट. एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ द कोड उसका उल्टा है, राइट. कोड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हैव द इक्वल लेंथ, राइट. अगर ये कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है तो उसकी लेंथ भी कैसी होगी, सेम. Now question number 1. Two circles of the radius 5 and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find out the length of the common chord. Find out the length of the common chord. So see, this is the circle and this is another circle with the center. This is the chord AB. This is the O dash. See, this is the center of this circle. O is the center of this circle. This is the common chord AB, and we have to find out the length of this common chord AB. Okay. Now observe one thing. See, what is given here is the radius of the two circle is given 5 and a 3. 5 and a 3. So ये सेंटर से अगर इसको मेजर करेंगे तो कितना होगा भाई, सिंपल सी बात है, कितना होगा, 5. एक 5 होगा, राइट. एक क्या होगा, 3 centimeter. The two circles of the radius 5 centimeter and 3 centimeter intersect at a 2 point, right. So sorry. Okay, this is going to be the 5 and this is going to be the 3. तो अब क्या करेंगे, sorry, this is going to be the 3. Okay, now let's see. In O dash, we can say AO square is equals to 5 square. See, AO is going to be the 5, 25. Now AO dash is going to be the 3 square, 9, and OO dash is going to be the 16. To find out the length of the common chord. Okay, so we can say that AO dash square plus OO dash square is equals to 9 plus, so this is going to be the right angle triangle. This is going to be the right angle triangle, right. Okay, distance between the center is given here. See, one thing that I am missing here is, see, the radius of the two circle is given. The distance between the center is 4 centimeter. So distance between the center is 4 centimeter, right. Now you can put here 4, you can put here 3 and put here 5. तो अब ये क्या बन रहा है भाई, तो ये बन रहा है परपेंडिकुलर, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल. अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो ये एंगल कितने का होगा, 90 का होगा, राइट. दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. So this angle is going to be the 90. AO dash O is going to be the 90 by the converse of the Pythagoras theorem. So similarly BO dash is equals to 90, right. ये भी 90 का होने वाला है. So we can say this is the straight line. So hence the straight line, whose midpoint is O. So we can say AB is equals to 3 plus 3 is equals to 6 centimeters. Okay. So now let's move on to the next sum. 3 girls, Reshma, Shalma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of a radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws to the ball Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between the Reshma and Salma, between Salma and Mandeep is 6 meters each, what is the distance between the Reshma and Mandeep? So see, the condition I'm going to draw over here, and that is a circle with the center O. Reshma is standing over here, Reshma, then here is the Salma, right, and then here is the Mandeep. So what I have to find is, I know the distance between these two is 6, but I have to find out the distance between the Reshma and Mandeep. So O to S, so it is simple. See, सेंटर से सर्कल के किसी भी डिस्टेंस को मैं अगर लाइन ड्रॉ करूँ तो वो रेडियस होने वाला है, और रेडियस हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है भाई, 5 meters. So the radius is going to be the 5, so this is going to be the 5.
ये भी रेडियस होने वाला है 5, ये भी रेडियस होने वाला है 5. सिंपल. नाउ I have to find out the distance RM, right? Okay, now let's move. This is the point, intersection point K. Now OR is the radius 5, right? R2 S 6 is given already. Now what I'm going to do here is I'm going to draw the perpendicular from the perpendicular line from the here. If I do the perpendicular line, this is but obviously bisects, so it is going to be the 3. So this is 5, this is 3. With the help of Pythagoras theorem, this line you can get as a 4. Now the thing is simple. See, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, अलग से ट्राइंगल ड्रॉ कर लूंगा. ये मुझे पता है O R S, और यहाँ से ये क्या होगा हमारा K, और ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉर कोई भी एक नाम दे दो, तो इसको ये M दे दो, राइट? तो अब एरिया ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज रिमेन्स दी सेम. चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होगा इसमें, राइट? सो OL is perpendicular to the AS. OL square is equals to, so this point is given as an L. This point is given as a L, right? So you very well know how to do it, right? So OL is going to be the 4. So now let's move on the now in the right now in the triangle ORS. Now in the triangle ORS, right? Half into base into height, half into base. Base कौन सा लिया है? KR. KR. Okay, this is going to be the height and the base is going to be the S. So base into height, right? KR into OS. Then KR into OS. So the area is going to be the 12 meter square. For what? Area of ORS, what? So RS into OL. RS into OL is half into base into height. तो ये एरिया और ये एरिया सेम ही होने वाला है. क्यों? क्योंकि वो एक ही ट्राइंगल का एरिया, तो एरिया चेंज नहीं होते. सो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ. सो इसको और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको और इसको मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, राइट? सो वी कैन से नाउ 2 नीचे से ऊपर और ये 5 ऊपर से नीचे जाएगा. सो KR इज गोइंग टू बी द 12 2 24 by 5. It is going to be the 4.8 meter, right? So the distance between the so still we have to find. We just got here the KR, right? अब ये परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट कर रहा है, बट ऑब्वियसली तो अगर ये 4.8 का है तो ये भी कितने का होने वाला है भाई? 4.8 का होने वाला है. So the total distance between the Reshma and Mandip is going to be the 9.6 meter. Okay, so that is your answer. Hence the distance between the Reshma and Mandip is going to be the 9.6 meters. Now the circular park, the radius is 20 meters, situated in a colony. 3 boys, Ankur, Sayyid, David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. Simple. ये भी सिंपल सा सम है. ये अंकुर खड़ा है, यहाँ पे सैयद खड़ा है और यहाँ पे डेविड खड़ा है. अब इस ट्राइंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे दिया हुआ ही है, राइट? सो द डिस्टेंस बिटवीन द सिटिंग एट एन इक्वल डिस्टेंस, सिटिंग एट एन इक्वल डिस्टेंस. अगर ये दोनों 5 पर है तो ये दोनों भी 5 पर और ये दोनों भी 5 पर. दैट सिंपली मीन्स इट इज गोइंग टू बी द इक्विलेटरल ट्राइंगल. नाउ इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसका मीडियन, उसका एल्टीट्यूड दोनों कहाँ से पास होगा? सेंटर से. ऑल्टीट्यूड राइट एंगल ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड मीडियन भी सेम ही होता है, राइट? तो राइट एंगल का हो जाएगा. सिमिलरली ये भी और ये भी, और इसको मैं नाम दे दिया P Q and R. अब मुझे पता है कि बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर ये मैं x कर लूँ तो ये भी x का होगा, ये भी x का होगा, ये भी x का होगा, ये भी x का होगा और ये भी x का होगा. तो सारे के सारे कितने के होंगे? x x के होंगे. ये परपेंडिकुलर्स है, राइट? 20 मीटर्स हैं, क्यों दिया हुआ ही है. द सर्कुलर पार्क इज 20 मीटर, द रेडियस इज 20 मीटर. तो यहाँ से ये डिस्टेंस 20 का, ये डिस्टेंस 20 का और ये डिस्टेंस भी 20 का, राइट? All the distance are equal. Now what I have to find is find out the length of the string. So I have to find out this AS, or you can find out SD, or you can find out AD, because each and every distance are equal, right? Now equilateral triangle का एरिया क्या होगा? तो मुझे पता है कि भाई वो एक है √3/4 x स्क्वायर, और यू कैन से साइड स्क्वायर, राइट? चलो दूसरा एरिया क्या होगा? तो भाई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? सिंपल. सो from here what I can do here is, see, this is the √3/4. s कितना है? x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस. तो बेस कितने का है? 2x का है.
इंटू हाइट कितने की है, तो ये 20 का है और ये 10 का होगा. कैसे वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में. तो ये 30 का हो जाएगा, राइट. सो 2 and 2 विल बी कट दैट आउट, राइट. दिस x square और दिस x is cutted out. So here x is equals to 30 multiplied by 4 divided by square root of 3. This is going to be the 10 3s are. This is the root 3, root 3, root 3, root 3 cut. So 10, 4 and root 3 is remain. So it is going to be the 40 square root of, if that's something, his answer will be there, right? So this is okay, the thing I remember. See, in equilateral triangle, this is called the centroid. Centroid, this is called the centroid. And centroid divides the median into the 2:1. किस में डिवाइड करेगा? 2:1 में. So what does it mean? AO is to OP is equals to 2:1 is equals to 2:1. So AO की वैल्यू मेरे पास है 20, OP का पता नहीं, is equals to 2/1. तो अब क्या करेंगे भाई, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा. सो OP is equals to 20/2, so OP is going to be the 10, right? See, these things you have to write it your own. Centroid divides 2:1, OP upon OP is 2:1, 20 upon OP is equals to 2/1, so OP is equals to 10 meter, right? So AP is equals to 30. So now in APD, right, you are applying the right angle triangle also. Here I am going to apply the right angle triangle. So the value of x are directly find, right? So 3x square is equals to 900, and we can say x square is equals to 300. So x is equals to 10 root 3. पर वो मेरे पास x आया, वो मेरे पास क्या आया, x आया, लेकिन मुझे तो पूरा फाइंड करना है, और पूरा का पूरा क्या होगा, तो 2x होगा. सो आंसर इज गोइंग टू बी द 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट. सिंपल. वापस एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. क्या किया है कि भाई मैंने बोला था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में खाली क्या अप्लाई कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम. सो दिस इज द 30 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, राइट. तो 2x स्क्वायर, राइट. सो after simplifying you will get the answer 10 root 3, and then you can say 20 root 3. So it is an equilateral triangle, so therefore we can say they have the equal distance 20 root 3 meters.